काव्यप्रकाशे पञ्चमोल्लासे अन्तिमे पश्यन्तु। तत्र आदौ वैयाकरणानां वेदान्तिनां मतोल्लेखः कृतः, इतोपि मीमांसकानामपि। अन्विताभिधानवादम् अभिहितान्वयवादं भवन्तः पठितवन्तः। तत्र तैः यथा प्रक्रिया उक्ता वर्तते, कथं संकेतग्रहविषये अपि पुनः व्यञ्जनविषये अपि तेषां यथा मतं वर्तते, तस्य अत्र अस्मिन् उल्लासे विस्तरेण आदौ मम्मटः उल्लेखं करोति, तदुत्तरं तेषामपि खण्डनं तेन कृतम्। अन्ते च अनुमानवादी यः आचार्यः वर्तते महिमभट्टः, तस्य खण्डनम् अनेन प्रस्तुतम्। तर्हि आदौ उक्तमस्ति महिमभट्टः किं कथयति व्यञ्जनाविषये। वस्तुतः सः व्यञ्जनां नाङ्गीकरोति। सः कथयति यत् व्यञ्जनायाः अपेक्षा नास्ति, यादृशः बोधः व्यञ्जनया जायते तादृशः बोधः अनुमानेनपि कर्तुम् अस्माभिः शक्यते। कथम् इति चेत् तेन अत्र तर्कः प्रस्तूयते। ननु वाच्यात् असम्बद्धं तावन्न प्रतीयते, यतः कुतश्चित् यस्य कस्यचित् अर्थस्य प्रतीतेः प्रसंगात्। सर्वप्रथमं किं कथयति? वाच्यात् असम्बद्धं न प्रतीयते, अर्थात् यः शब्दः भवति तस्य निश्चितः अर्थः कश्चन भवत्येव। तत्र असम्बद्धः अर्थः तु उपस्थापितः न भवति। एवं तु न भवति यत् वयं वदामः जलं, तर्हि अस्माकं पुरतः अग्नेः उपस्थितिः भवति, एवं न भवति। अर्थात् किं कथयति? तत्र नियतसम्बन्धः भवति। यदि एवं न अङ्गीक्रियेत चेत् किं भवेत्? तर्हि उक्तं कुतश्चित् यस्य कस्यचित् अर्थस्य प्रतीतिः भवेत्। यदि एतत् सिद्धान्तं वयं नाङ्गीकुर्मः चेत् किं भवेत्? यत्किमपि वयं शब्दम् उच्चारयामः तस्य तस्मात् यस्य कस्यापि अर्थस्य उपस्थितिः भवेत्। किम् उक्तमस्ति विष्णुविनीता? किमत्र सूच्यते? यत् यदि हम ये नहीं माने कि वाचक जैसे ही किसी शब्द का हमने उच्चारण किया उससे एक नियत अर्थ की उपस्थिति होती है, ये सिद्धांत प्रत्येक दार्शनिक और प्रत्येक काव्यशास्त्री मानता है ना। उसी वही संकेतक ग्रहण प्रक्रिया जो आप देखते हैं, यदि इस सिद्धांत को हम न माने तो क्या होगा? अराजकता जैसी स्थिति होती है ना, वैसी हो जाएगी। हम कोई भी शब्द बोलेंगे उससे कोई भी अर्थ निकलेगा, या इस शब्द का मैं कोई अर्थ समझूंगी तुम कोई और समझोगे, क्योंकि वहां पे फिर कोई नियत संबंध ही नहीं होगा। ये संबंध क्या है? इस शब्द और इस अर्थ के बीच में एक नियत संबंध है। जब जब भी हम जल बोलेंगे तो जो जल तत्व है वही हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। तो ईदृशः सिद्धान्तः सर्वैरपि अङ्गीक्रियते इति आदौ तेन उक्तम्। अनन्तरं किमुच्यते? एवञ्च सम्बन्धात् व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावो अप्रतिबन्धे अवश्यं न भवतीति व्याप्तत्वेन नियतधर्मनिष्ठत्वेन। अत्र किमुच्यते? तथैव व्यङ्ग्यव्यञ्जकयोः अपि सम्बन्धः भवति। अग्रे तेन वक्तव्यमस्ति व्याप्तिसिद्धान्तविषये। तर्हि अयं शब्दः व्यञ्जकः, तर्हि तस्मात् यः अर्थः निष्पद्यते सः अर्थः भवति व्यङ्ग्यः। तर्हि व्यञ्जकशब्दात् व्यङ्ग्यार्थः एव निष्पद्यते। यथा वाचकशब्दात् वाच्यार्थः निष्पद्यते, तथा व्यञ्जकशब्दात् व्यङ्ग्यार्थः निष्पद्यते। ईदृशी व्याप्तिः दृश्यते। अग्रे सः अनुमानप्रक्रियाम् अत्र आनयति, अतः आदौ अत्र सूचयति कथम् अत्र व्याप्तिसम्बन्धं वयं पश्यामः। व्याप्तिः इत्युक्तौ किं? सामान्यरूपेण भवन्तः जानन्ति किं? व्याप्तिः इत्युक्तौ परिभाषां वदन्तु। व्याप्तिः तदुदाहरणं परिभाषां वदतु। सरलमस्ति भो। साहचर्यनियमः। वयं किं वदामः? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। अत्र साहचर्यं वयं पश्यामः न वा? यदि धूमः अस्ति चेत् तत्र अवश्यं वह्निः स्यात्, वह्निः भवत्येव इति अत्र वक्तव्यमस्ति। तर्हि साहचर्यनियमम् अत्र सः आनेतुम् इच्छति। तस्मात् प्राक् किं सूचयति? यथा वाचकात् वाच्यार्थः निष्पद्यते, यथा व्यञ्जकात् व्यङ्ग्यार्थः निष्पद्यते, ईदृशी
व्याप्तिं वयम् अत्र पश्यामः। किमर्थं तर्हि अत्र उच्यते नियतधर्मिनिष्ठत्वेन। अत्र नियतधर्मः कः, व्याप्तिः का इति सूच्यते। नियतधर्मः कदा भवति? अत्र अनुमानप्रक्रियायां द्वयं भवद्भिः ज्ञातव्यं। व्याप्तिः इत्युक्तौ साहचर्यनियमः, साहचर्यसम्बन्धः, इतोपि यत् उच्यते पक्षधर्मता। अत्र शब्दत्रयं भवद्भिः ज्ञातव्यं। किं किं? पक्षः, अर्थं सूचयन्ति केऽपि? पक्षः नाम को अर्थः? परिभाषां भवान् उक्तवान्, संदिग्धसाध्यवान् पक्षः। अर्थः का भवति? जहाँ पर साध्य संदिग्ध अवस्था में रहता है, यथा उदाहरणं किमर्थं? तत्र धूमज्ञानाय वा? अत्र संदिग्धसाध्यवान् पक्षः। अस्तु, आदौ त्रयाणां विषये वदतु, अनन्तरं पूर्णम् उदाहरणं पश्यामः। सपक्षः नाम निश्चित साध्यवान् पक्षः। निश्चित साध्यवान् सपक्षः। विपक्षः तर्हि निश्चित साध्याभाववान्। उदाहरणं पश्यामश्चेत् निश्चित साध्यवान्, अत्र यथा उदाहरणं दत्तं पर्वतो वह्निमान् धूमात्। तर्हि अत्र वह्निः विधीयते, तस्य अनुमानम् अस्माभिः क्रियते। तर्हि अत्र पर्वतः भवति संदिग्धसाध्यवान्, पर्वतः पक्षः। निश्चित साध्यवान्, यत्र नियमेन अस्माभिः वह्निधूमयोः साहचर्यसम्बन्धः दृष्टः वर्तते, तादृशं स्थलं वयं किं पश्यामः? महानसं पश्यामः। तर्हि महानसं। विपक्षः, यत्र निश्चयेन व्याप्ति वयं न पश्यामः। ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पे हम नहीं देखते वन्य धूमों की व्याप्ति? महावृद्धः, तालाब, तडागः, वृदः, महावृदः इति। तर्हि इदानीम् एतत् त्रितयमपि तत्र अपेक्षते। अतः किम् उक्तमस्ति अग्रे पश्यतु, त्रिरूपा लिंगालिंगी ज्ञानम अनुमानम यत् तद्रूपः पर्यवस्यति। अत्र अस्मिन् प्रसंगे अपि यदि वाच्यार्थः, यथा धूमेन वयम् अग्नेः अनुमानं कुर्मः, तथा वाच्यार्थेन वयं व्यङ्ग्यार्थस्य अनुमानं कुर्मः इति वक्तुम् इच्छति। तर्हि यथा स्थितिः अत्र भवति, यतोहि यदा व्यङ्ग्यार्थः उच्यते तर्हि आदौ भूमिकायां तत्र वाच्यार्थः भवति न वा? भवति। तर्हि वाच्यार्थः लिङ्गवत् भवति, यथा धूमः तथैव वाच्यार्थः इति तेन कथनीयमस्ति। अतः किं वदति अत्र, ये हेतोः त्रीणि विशेषणानि भवन्ति, तानि सर्वाण्यपि अत्र भवन्ति। अतः वयं वक्तुं शक्नुमः ईदृशी व्याप्तिः अत्रापि अस्ति। अतः वाच्यार्थेन व्यङ्ग्यार्थस्य अनुमानं वयं कर्तुं शक्नुमः। पृथक्तः व्यञ्जनावृत्त्याः अपेक्षा नास्ति। जैसे थोड़ा तुम लोगों ने कभी तर्क भाषा या तर्क संग्रह पढ़ा होगा तो अनुमान की प्रक्रिया पढ़ी ना, तो वहाँ पे पक्ष, सपक्ष, विपक्ष ये बताएंगे।
तो ये जब तीनों उपस्थित होते हैं तभी वो हेतु कैसा होता है? सद हेतु होता है। अन्यथा तो वो क्या होता है? हेत्वाभास होता है। हाँ, हेतु का आभास, हेतोः आभासः हेत्वाभासः अथवा हेतुवत् आभासन्ते हेत्वाभासः इति परिभाषाद्वयमपि उच्यते। तत्र ईषत् भेदः भवति, तस्मिन् विषये न गच्छामः। तर्हि अत्र एतत् सर्वं सूच्यते कथं हेतुरूपेण वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। यथा धूमः अस्ति तथैव वाच्यार्थस्य स्थितिः भवति। धूमलेखां दृष्ट्वा वयम् अग्नेः अनुमानं कुर्मः। दूर से आपको पर्वत पे जो धूमलेखा दिखाई दे रही है, धूम दिखाई दे रहा है, उससे आप क्या अनुमान कर लेते हैं कि पर्वत वन्यमान है ना? वैसे ही बता रहे हैं कि यदि वाच्यार्थ का बोध होता है, शब्द का उच्चारण हुआ, उससे कोई न कोई अर्थ है जो कि संकेतित अर्थ है, उसका बोध हुआ, तो वो जो वाच्यार्थ है वही जब एक उत्कृष्ट सुंदरता पूर्ण कोई चमत्कार वाला अर्थ उपस्थित कर देता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? ये व्यंग्यार्थ है। तो भूमिका में तो वो शब्द ही था ना, अर्थात वो वाच्यार्थ ही था। वाचक है, फिर वाच्यार्थ है और फिर उसके बाद में उसी पे आधारित व्यंग्यार्थ है। तो जैसे धूम है और उसको देख करके हमने अग्नि का अनुमान किया, वैसे ही हमने वाच्यार्थ का ग्रहण करके व्यंग्यार्थ का अनुमान किया। इसको ये सिद्ध करना चाहते हैं। तो इनका पूर्व पक्ष समझ में आया? हाँ, अब ये सब अभी आने वाला है, क्योंकि ये तीनों समझेंगे तब हम दोष जानेंगे। जब मम्मट खंडन करेंगे तो वो यही बताएंगे कि इनका हेतु दुष्ट है, इनके हेतु में दोष है। वो दोष कैसे होंगे, उन दोषों को जानने के लिए पहले हमें ये तीन बातें जानना आवश्यक है। अभी हम पर्वत में वह्नि का अनुमान कर रहे हैं ना, तो वो क्या है? संदिग्ध साध्यवान। अनुमान के मूल में होता है संदेह या संशय। संशय नहीं है तो अनुमान की प्रक्रिया का आरंभ ही नहीं है। आपको संदेह हो रहा है कि वहां वह्नि है या नहीं है, तो आप अनुमान कर रहे हैं, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? संदिग्ध साध्यवान पक्ष। ठीक है। फिर उसके बाद में जहां पे आप वहां वह्नि का अनुमान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने पहले अपने जीवन में देखा है कि जहां जहां धूम है वहां वह्नि है, इसीलिए आप किसी ऐसे उदाहरण का चिंतन करते हैं। वो अनुमान आप कर भी इसीलिए पा रहे हैं क्योंकि आपने कभी प्रत्यक्ष किया है कि जब जब कहीं पर धूम दिख रहा है तो उसके मूल में वह्नि होती है ना। इसीलिए जहाँ पे निश्चित रूप से आपने ये अवस्था देखी है वो स्थल क्या होता है? महानस या पाकशाला, है ना। तो इसीलिए सपक्ष किसको कहा? महानस। निश्चित साध्यवान सपक्ष। अनंतरम विपक्षः तो निश्चित साध्याभाववान यत्र साध्यस्य दर्शनं कदाचिदपि न भवति तादृशं स्थलं किं भवति? विपक्षः। तर्हि हेतोः गुणाः कथं सिद्ध्यन्ति? तर्हि पक्षे सत्वं, पक्षे तस्य सत्ता अपेक्षते। पुनः सपक्षे सत्वं, सपक्षे अपि सत्ता अपेक्षते, किंतु विपक्षे असत्वम् अपेक्षते। विपक्षासत्वं, विपक्षे असत्वं, विपक्षे तस्य सत्ता न अपेक्षते। एतत् त्रयमपि यदि सिद्ध्यति चेत् वयं वक्तुं शक्नुमः अयं हेतुः सद्हेतुः, अन्यथा तु हेत्वाभासः इति। एतावत् अवगतम्? तर्हि अग्रे उदाहरणं दीयते। किम् उदाहरणं? भ्रमधार्मिक विश्वस्तः सश्वाद्यमारितस्तेन गोदा नदी कच्छकुञ्जवासिना दृप्तसिंहेन। अत्र प्रायः अर्थं भवन्तः जानन्ति, बहुवारं पठितवन्तः स्युः। काचित् नायिका वर्तते, सा प्रतिदिनं नायकेन सह मेलनार्थं गोदावरी नद्याः समीपे गच्छति। तस्याः नद्याः तटे यत् उपवनं वर्तते तत्र द्वयोः मेलनं प्रतिदिनं भवति। तत्र कश्चन आगच्छति धार्मिकः पुष्पाणि चेतुं, तेन किं भवति? तयोः मेलने बाधा भवति। अतः सा किमिच्छति? अयमत्र न आगच्छति। तर्हि तया प्राक् ज्ञातमस्ति यत् अयं भीरुः भवति। अस्य गृहस्य समीपे अपि यदि
शुनकः भवति चेत् अयं भीतो जायते। अतः सा किं वदति, अत्र यः कुक्कुरः यः श्वानः आसीत् तं श्वानम् अत्र एकेन सिंहेन सः श्वानः तु मारितः, पुनः किं दृप्तसिंहेन मारितः इति सा सूचयति। एतावदेव सा वदति। सा अग्रे किं वदति, आदौ भ्रमधार्मिक, अत्र विधिरूपं दृश्यते। सा वदति अच्छे से आप घूमो, भ्रमधार्मिक इति। किन्तु अत्र व्यङ्ग्यः कः, मा भ्रम, अत्र न आगन्तव्यमेव। यतोहि भवान् तादृशः भीरुजनः वर्तते, तर्हि यदि भवान् शुनकं दृष्ट्वा अपि भवतः भीतिर्जायते चेत्, यदि सिंहं पश्यति चेत् भवतः किं भवेत् इति। किन्तु एतत् सर्वं सा न वदति, केवलं सूचनामात्रं ददाति। तर्हि अत्र वाच्यार्थस्तु भिन्नः एव। यः व्यङ्ग्यार्थं न अवगच्छति सः किं चिन्तयति, नायिकायाः मनसि महती चिन्ता स्यात्, धार्मिकस्य हानिः न जायेत, अतः सा किं वदति, न अत्र भवान् इदानीम् आगन्तुं शक्नोति, भवान् तु केवलं शुनकात् बिभेति, इदानीं तु सः शुनकः नास्ति इति। किन्तु एवं चिन्ता तु नास्ति, यः शुनकात् बिभेति सः निश्चयेन सिंहात् बिभेति, किं तस्य मृत्युः एव भविष्यति। दृष्ट्वापि न, श्रुत्वा एव केवलं तस्य यदि सः ध्वनिं शृणोति चेत् तस्य मृत्युः एव भवेत्। अतः सा एवं वदति। तर्हि वाच्यार्थस्तु विधिरूपः, किन्तु व्यङ्ग्यार्थः निषेधरूपः। अत्र आलङ्कारिकाः किं कथयन्ति, अयमर्थः व्यञ्जनया वृत्त्या एव ज्ञातुं शक्नुमः, अविधया न ज्ञातुं शक्नुमः। अत्र एवं पश्यामश्चेत् मुख्यार्थबाधः अपि न दृश्यते, अतः लक्षणायाः विषयः अपि न भवति, मुख्यार्थे बाधा नास्ति काचिदपि। एवं सामान्यरूपेण पश्यामश्चेत् का बाधा, किन्तु अत्र यदि ईदृशः अर्थः अपेक्षते चेत् चमत्कारः न दृश्यते। व्यञ्जनया वृत्तया यदा ज्ञानं भवति तदानीं तु अत्र अपूर्वचमत्कारं वयं पश्यामः। अतः व्यञ्जनावृत्त्या एव निषेधरूपः अर्थः ज्ञायते इति मतं वर्तते मम्मटाचार्यस्य अथवा अन्येषाम् आलङ्कारिकाणां काव्यशास्त्रिणां। किन्तु अयं किं वदति, अग्रे दर्शयति। अस्य पद्यस्य अर्थम् इदानीं तु अहं सामान्यतया उक्तवती, अत्र अग्रे पश्यन्तु। अयं महिमभट्टः कथयति, अत्र गृहे श्वनिवृत्त्या भ्रमणं विहितं, गोदावरीतीरे सिंहोपलब्धेः अभ्रमणम् अनुमापयति। प्राग् यत् दृष्टमस्ति, किं दृष्टमस्ति, गृहे यत्रापि तस्य गृहं वर्तते धार्मिकस्य, तत्र श्वनिवृत्त्या यदा सः शुनकः न भवति, तस्य निवृत्तिः भवति, सः दृश्यते इति न, तस्य प्रत्यक्षं न जायते, तदानीम् अयं भ्रमणं करोति। यः भीरुः अस्ति सः स्वगृहस्य समीपे अपि कदा भ्रमति, यदा शुनकः तत्र नास्ति इति प्राक् दृष्टमस्ति। अतः एतदेव किं दर्शयति, गोदावरीतीरे सिंहोपलब्धेः अभ्रमणं निश्चयेन भवेत् इति अनुमानम् इति अनुमापयति। तस्मात् एतद् अनुमानं यत्र यत्र भयहेतुः वर्तते तत्र तत्र भीरुभ्रमणं न भवति इति, यत्र यत्र भयहेतुः नास्ति तत्रैव भीरुभ्रमणं भवति इत्युक्तौ सः तथा दुर्बलः वर्तते। तर्हि अत्र एवम् अनुमानं सः दर्शयति, किं यत् प्राग् एतत् दृष्टमस्ति, यदि गृहस्य समीपे सः शुनकः न दृष्टः चेत् अस्य भ्रमणं भवति। अतः गोदावरीतीरे सिंहोपलब्धे, गोदावरी के तट पर अब तो सिंह की उपलब्धि हो गई ना, वहाँ पे सिंह है ऐसा वो कह रही है, तो इससे क्या अनुमान होता है, अभ्रमण, अब वो नहीं घूमेगा ऐसा अनुमान करते हैं। बात समझ में आई पंक्ति पूरी, कि पहले घर के निकट या घर के परिक्षेत्र में ऐसा देखा है कि जब वो कोई कुकुर वहाँ नहीं होता है तभी वो भीरू जो है वो भ्रमण करता है धार्मिक। तो इस कारण से गोदावरी के तट पर जब सिंह की उपलब्धि हो गई है तो उसका अभ्रमण हम अनुमान कर सकते हैं, वो नहीं आएगा ना। ऐसा हम जीवन में रोज ही करते हैं ना कि अब तो ऐसा हो गया है ना, वो बिल्कुल नहीं आएगा।
वो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ एक पंक्ति में ये सूचित किया। फिर आगे और उसका विस्तार करते हैं। यद् यद् भीरु भ्रमणम तत् तत् भय कारण निवृत्ति उपलब्धि पूर्वकम। यदा यदा इत्युक्तौ भीरु भ्रमणं भवति तदा किं भय कारण निवृत्तिः वर्तते इति स्वयमेव ज्ञानं भवति। अर्थात यदि धार्मिकः भ्रमणं करोति चेत् किं ज्ञानं भवति, तत्र भयजनक हेतुः नास्ति। हाँ, मतलब ऐसे लोग होते हैं ना, अरे आज आप घूम रहे हैं, इसका मतलब है आज रोड पे कुत्ते नहीं है, जो होता है ना, बहुत सारे लोग नहीं जाते। सुबह शाम को भी लोग जो घूमने जाते हैं उनके साथ भी ये घटना होती है ना। तो कोई लोग इसी वजह से नहीं घूमते, छत में ही घूम लेते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि सड़क पे निकलेंगे तो कुत्ते हैं, या किसी और से भी हो सकता है भय से। कहीं बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे आपने, गाय बैल उड़ा देते हैं, ऊपर सींगों से उछाल दिया है, ऐसा कोई क्षेत्र, तो अगर वो क्रुद्ध है पशु तो कोई आपकी हानि कर सकते हैं। तो भयवशात भ्रमण नहीं करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि नहीं, वो वीरता पूर्वक करते हैं। तो यहाँ पे हाँ, ये एक अनुमान सिद्ध कर दिया क्या, कि अगर भीरु भ्रमण हो रहा है, इसका तात्पर्य है कि जो भयजनक हेतु है उसकी अनुपलब्धि वो वहाँ पे नहीं, कोई भी डरावना प्राणी वहाँ पे नहीं है जो कि हानि पहुंचाता है ना। फिर आगे क्या बोलते हैं, अब इसी तथ्य को गोदावरी के तट पर आरोपित कर दिया। गोदावरी तीरे च सिंहोपलब्धिरिति व्यापक विरुद्धोपलब्धि, अतः प्राग्दृष्टमस्ति भयजनक हेतु यदि न भवति चेत् वीरोः भ्रमणं जायते। अतः गोदावरी तीरे यदा सिंहोपलब्धिः तदानीं तस्य भ्रमणाभावः अवश्यं भवेत् इति व्यापक विरुद्धोपलब्धिः प्राप्ता। इत्युक्ते विरुद्धोपलब्धिः इत्येव, विरुद्धोपलब्धिः इत्युक्तौ व्यतिरेकव्याप्तिः अत्र लब्धा। व्याप्तिद्वयम्, अन्वयव्याप्तिः भवति अथवा व्यतिरेकव्याप्तिः भवति। अन्वयव्यतिरेकयोः सामान्य अर्थं भवन्तः जानन्ति। तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम् इति अन्वयः, तदभावे तदभावः इति व्यतिरेकः। तर्हि यदा वयं वदामः यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति अन्वयव्याप्तिः, किन्तु यदि एवं वदामः न, यत्र वन्यभावः तत्र धूमाभावः इति भवति व्यतिरेकव्याप्तिः। इदं व्याप्तिविषये बहु वयं ज्ञातुं शक्नुमः, किन्तु तत् सर्वं पठामश्चेत् अनन्तरं मम्मटस्य मतं वयं न ज्ञातुम् अर्हामः। इति सामान्यतया एतावदेव भवद्भिः ज्ञातव्यम्। अभावमुखेन या व्याप्तिः सा भवति व्यतिरेकव्याप्तिः, भावमुखेन तु अन्वयव्याप्तिः। किं ज्ञातम्? तो दो प्रकार की व्याप्ति होती है, व्याप्ति भेद हमने देखे। तो यहाँ हाँ, तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम्, तदभावे तदभावः इति व्यतिरेकः एवम् उच्यते। तर्हि सम्प्रति वयम् एतत् पश्यामः। अत्र यथा भवन्तः पर्वतो वह्निमान्, यदि एतत् प्रतिज्ञावाक्यं भवति चेत् भवद्भिः पञ्चावयवाक्यानि दृष्टानि इति भवन्तः जानन्ति। तर्हि कानि तानि वाक्यानि? हेतुः, उदाहरणम्, उपनयः, निगमनम्, एतानि पञ्चावयवाः भवन्ति अनुमानप्रक्रियायाः। तर्हि अत्र यदि अस्माभिः साधनीयं चेत् अत्र प्रतिज्ञावाक्यं किं स्यात्? किं साधनीयमस्ति? गोदावरी तटं भीरुभ्रमणायोग्यम्। साधनीयं किमस्ति? मा भ्रम इत्यर्थः अनुमानेन सिद्ध्यति। मम्मटः कथयति व्यञ्जनया एव सिद्ध्यति, अयं वदति अनुमानेन अपि वयं ज्ञातुं शक्नुमः मा भ्रम इत्येव नायिकया वक्तव्यमस्ति इति। तर्हि अत्र प्रतिज्ञावाक्यं गोदावरीतटं भीरुभ्रमणस्य कृते अयोग्यं, भीरुभ्रमणायोग्यम् इति। अत्र हेतुः किम्? भयकारणस्य उपस्थितिः वर्तते। भयकारण सिंहोपलब्धेः। एतत्
भवति, क्यों नहीं वो घूमेगा, क्यों नहीं वो स्थान उसके घूमने के लिए योग्य है, तो उसके लिए कारण बताना पड़ेगा ना कुछ। तो कारण अभी हमने देखा, वहां पे सिंह की उपलब्धि हो गई है, और वो सिंह क्या है, भय का कारण है। जो व्यक्ति श्वान से डरता है वो तो सिंह से डरेगा ही नहीं, तो भय का जो हेतु है सिंह, उसकी उपलब्धि हो गई है गोदावरी तट पर, इसीलिए वो स्थल जो है वो भीरू भ्रमण के लिए योग्य नहीं है। ये जो हम बोलते हैं तर्क सहित बात करो, तो वो न्याय ऐसी प्रक्रिया में सिखाता है आपको। जैसे हम ये अनुमान की सिद्धि कर रहे हैं, तो वहाँ पे हेतु क्या है, हेतु आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा हेतु, भय कारण सिंहोपलब्धि है। फिर उदाहरण दिया, उदाहरण हमने वाक्य देखा था अभी, यद्यत् भीरू भ्रमण योग्यम, भीरू कहाँ घूमता है, यत्र भय कारणं नास्ति, तर्हि यद्यत् भीरू भ्रमण योग्यम तत्तत् भय कारणाभाववत्। इदानीम् उदाहरणं दीयते, यथा गृहम्, उदाहरणस्य किञ्चित् विवेचनं कृतं, साक्षात् गृहमपि वक्तुं शक्यते स्म, किन्तु तावत् यथा तत्र वयं वदामः यथा महानसः पर्वतो वह्निमान् धूमात् यथा महानसम् इति वदामः। अत्र किञ्चित् विवरणमपि कृतं वर्तते, यद्यत् भीरू भ्रमणयोग्यं तत् भयकारणाभाववत् भवति। भीरू के लिए भ्रमण का जो उचित स्थल है वो कौन सा होता है, जहाँ पर भय का कोई भी हेतु उपस्थित न हो, है ना। तो जहाँ पे भय का कारण का अभाव हो, ऐसा जो स्थान है वो है उसका घर, है ना। घर में तो नहीं शेर आता है, तो वो वहाँ पे आराम से घूमता है, ठीक है। तो ये दिया उदाहरण। तो फिर इससे हमें क्या प्राप्त हुआ, आपको बनाए, हमें सिद्ध क्या करना है, गोदावरी तट पे भीरू को नहीं आना है ना, उसकी घूमने के लिए वो योग्य नहीं है। तो अभी हम उसके निकट जा रहे हैं, न चेदम तीरम, गोदावरी तीरम, तो न चेदम तीरम तथा भय कारणाभाववत् एतत् गोदावरी तटं तु तथा नास्ति, एतत् तीरं गोदावरी तीरं भय कारणात् मुक्तः नास्ति, मुक्तं नास्ति, यतोहि अत्र तु सिंहोपलब्धिः वर्तते। अतः न चेदं तीरं तथा भय कारणाभाववत्, कस्मात् इत्युक्तौ सिंहोपलब्धेः। अत्र निगमनं किं भवति, तस्मात् किं भवति, तस्मात् गोदावरी तटं भीरू भ्रमणायोग्यम्। अत्र धार्मिकः भ्रमितुं न अर्हति, इत्युक्ते तस्मिन् तथा सामर्थ्यं वयं न पश्यामः। एतत् अस्माकं पञ्चवाक्यानि भवन्ति। तर्हि पश्यतु, एवं पश्यामः चेत् अनुमानेन सिद्धिर्जायते, यत् साधनीयमासीत्। भ्रम इत्यत्र निषेधः वर्तते, मा भ्रम, किमर्थं, तर्हि तस्मिन् पद्ये एवं अनुमानं वयं ज्ञातुं शक्नुमः। यत्र यत्र भयजनकहेतुः भवति तत्र तत्र भीरुः भ्रमणं न करोति। तर्हि एवं अनुमानप्रक्रियां दर्शयति महिमभट्टः। अत्र मम्मटेन तस्य उल्लेखः न कृतः, किन्तु तत्र व्यक्तिविवेके वयं इतोपि विस्तरेण द्रष्टुं शक्नुमः। एतावत् किम् आसीत्, पूर्वपक्षः। अत्र सर्वमपि अनुमाने कथं व्यञ्जनायाः अन्तर्भावः भवितुं शक्यते, अस्मिन् विषये केचन विचाराः उक्ताः। सा प्रक्रिया कीदृशी भवेत् इति सूचितं। कथमत्र व्याप्तिः दृश्यते, कथमत्र पक्षधर्मता अपि ज्ञायते इति तस्य बुद्धौ तथैव तिष्ठति यत् अत्र क्या, जोर से बोलो, जोर से।
14 है यूनिक